Hello students, very good morning to all. In the last class, we understood part 1 in which we understood about the story and some of the examples. So today, we are continuing with the same chapter and in that we are starting with the part 2. So, what is the chapter's name? How much can you carry? So students, take out your maths workbook and be ready with the pencil and rubber. Okay, so here in this first question, that is, put tick mark for the heavier object and cross for the lighter object in the given box, and one has been done as an example. So here students, as you can see, the first example is given, that is of a newspaper and a notebook. Okay, so which one is heavier among these two? Yes, this notebook is heavier and the newspaper is lighter. So you have to tick mark in the box and cross in the respective boxes. Okay, so now let's start with the second one. Yes, the second one is needle and a sword. What is a needle? Needle यानी सुई and sword means तलवार. अब इन दोनों में से कौन सा हैवियर है और कौन सा लाइटर है? हैवियर मीन्स जो वेट में हैवी होता है, भारी होता है, एंड लाइटर मीन्स जो वेट में लाइटर होता है, हल्का होता है. सो यस स्टूडेंट्स, द स्वॉर्ड इज हैवियर एंड द नीडल इज लाइटर. So put a tick mark and cross in the respective boxes. Now the third one. Yes. What you can see here? Yes, this is a cricket ball and the another is marble. So among these two, which one is the heavier and which one is the lighter? Yes, this cricket ball is heavier and marble is lighter. So put a tick mark and cross in the respective boxes. Now the fourth one, school bag and compass box. तो students, इन दोनों में से heavier कौन सा होगा? Yes, school bag है ना. School bag बहुत भारी होता है and compass box हल्का होता है. So put a tick mark and cross. Now let's see the other ones. Yes. Now the next you can see. Yes, blazer and a shirt. So among these two, which one is heavier and which one is lighter? Guess karo. Yes, blazer is heavier than the shirt. So put the tick mark and cross. Now the next one, ऑरेंज एंड वाटरमेलन. सो स्टूडेंट्स, इन दोनों फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट भारी होगा? यस, वाटरमेलन एंड ऑरेंज इज लाइटर. सो पुट द टिक मार्क एंड द क्रॉस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस. नाउ द नेक्स्ट वन. यस, दिस इज अ राउंड पिलो एंड द अदर वन इज अ carpet. So which one will be heavier? Yes, the round pillow is heavier than the carpet. Now the next one, as you can see, a button and a tire. So students, which one will be heavier among these two? Yes, tire is heavier than the button. So tick mark there and put a cross over there. Now the second last. What you can see here students? Yes, a laptop and a cell phone. So laptop is heavier, है ना. laptop भारी है किससे? मोबाइल फोन से. So tick mark and cross. Now the last one, a plastic glass and a water bottle. So plastic glass और water bottle में से कौन सा हेवियर है और कौन सा लाइटर है? गेस करो. Yes, a water bottle is heavier
than the plastic glass. So students, question number 2 is your homework. Okay, and that also you have to tick mark on the heavier object and cross in the lighter object. Now take out page number 31. We will start with the question number 3. Place the objects as per the position of balance scale. One has been done as an example. So students, write down the date also. Okay. Now here what we have to do? Objects are given and we have to balance them, है ना. ये सीसॉ की तरह है, देख रहे हो आप. हमें इन फ्रूट्स को या ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है. जो ज़्यादा भारी है वो नीचे होता है एंड जो ज़्यादा लाइटर होता है, हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है. So the first one is done for you, watermelon and orange. So among these two, which one is the heavier? Yes, watermelon. So you have to draw the arrow. Now we will start with the second one, a pot and a water bottle. So students, पहचानो इन दोनों में से अभी कौन सा हेवियर होगा, जो नीचे की तरफ झुक जाएगा. यस, आप देख रहे हो जैसे कि पॉट है वो हैवी होता है ना, तो वो झुक जाएगा. और कौन सा लाइटर है? वाटर बॉटल. सो ड्रॉ द एरोस. नाउ द थर्ड वन. What you can see in the third one? Yes, balls. One is a simple ball, है ना, जिससे आप कैच खेलते हो, and the other is a football. So which one is heavier? Yes, a football is heavier. So you have to draw the arrows to balance the balls. Okay. Now we will continue with the other two. Yes. Now the fourth one. What you can see here, students? A pressure cooker and a steel bowl. So among these two, which one is the heavier? Yes, a pressure cooker. And which one is the lighter? A steel bowl. Now the last one, shoes and a comb. So इन दोनों में से अब कौन सा heavier है? Yes, shoes and comb क्या है? Lighter है. So draw the arrows to balance them. So here we have completed question number 3. Question number 4 is your homework. Now we will start with the question number 5. How much weight can they carry? Match the suitables in an appropriate way. One has been done as an example. So here students, now the students, as you can see here on the left side, animals, birds and human beings की photos दी गई है. And on the right side, ये जो चीज़ें कैरी कर सकते हैं, है ना, उठा सकते हैं, उनसे हमें क्या करना है? मैच करना है. सो जैसे कि फर्स्ट वाला किया हुआ है कि एक स्पैरो क्या कैरी कर सकती है? लीव. ओके. नाउ डोंकी. डोंकी कौन सी चीज़ उठा सकता है? कौन सी चीज़ कैरी कर सकता है? बॉल? नो. शुगर? नो. रेड चिली? नो. सीमेंट? यस. Donkey can carry a cement sack. So let's see the answer. Yes, a donkey can carry a cement sack. Now students, elephant. अब elephant कौन सी चीज़ उठा सकता है? Yes, है ना, वो इतने बड़े बड़े जो. Now what the elephant can carry? Elephant क्या कैरी कर सकता है? Yes, ट्रीज के ट्रंक. So you have to match. Okay. Now a dog. What a dog can carry? Yes, a ball. Now an ant. Ant क्या कैरी कर सकती है स्टूडेंट्स? वो क्या उठा सकती है? Yes, a sugar cube.
नाउ दिस इज अ मैन. वो क्या कैरी कर सकता है, क्या उठा सकता है? अब कौन सी चीज बच गई? रेड चिली एंड अ बैग, कैरी बैग. सो अ ह्यूमन बीइंग कैन कैरी अ बैग. नाउ द लास्ट वन, पैरट. पैरट क्या कैरी कर सकता है? यस, रेड चिली. सो स्टूडेंट्स, दिस वे you have to match the following which is given in question number 6. So students, now take out page number 37. Let's do homework. So what is the question given here? Give the serial numbers 1 to 5 from the lightest to the heaviest for the objects given below. So students, यहाँ पे आपको 5 questions दिए गए हैं. What you have to do? आपको objects को पहचानना है कि कौन सा, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, किन की पिक्चर्स दी हुई है? एनिमल्स की. ओके, सो ये एनिमल्स जो छोटे से हैवियर है ना, लाइटेस्ट से हैवीएस्ट है. जैसे कि माउस. सो माउस में आपको क्या लिखना है? 1. देन व्हाट विल बी द सेकेंड? यस, अ कैट. देन थर्ड, डॉग. फोर्थ, हॉर्स. एंड द लास्ट वन इज एलिफेंट. सो ऐसे आपको लाइटेस्ट से हैवीएस्ट नंबर पे आपको नंबर्स मार्क करने हैं. सो द अदर 4 यू हैव टू डू इन होमवर्क. सो एट लास्ट स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 that are given on page numbers 30, 32 and 34. You have to do it in your homework, and page number 37 also, which I have made you understand before. That also you have to do in the homework. At last, here we have completed our chapter 3 of workbook.